But before I start, I'd like to ask that do you see any relevance of mind and body connection? What is it about? I mean, I just want to hear the very first thought that you have. I'd like to hear one or two answers if anyone can fill me in. सर सर मुझे लगता है क्योंकि माइंड एंड बॉडी कनेक्शन इस तरह से अहम भी है कि हम प्रेजेंट बैठते हैं तो किसी एक जगह पे बैठे होते हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और घुमा हुआ कहीं और होता है। तो इस सिचुएशन में हम माइंड और बॉडी को एक ही सिमत में एक ही जगह पर रखकर किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकें, किसी चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें, उसकी यूनियन बहुत ज़रूरी है। Right, right. Great. So we have Mr. A- anyone else? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I think, dear, there is a connection of body with the mind, and it is necessary to be understand. Especially, it has relevancy to our profession. हम जब कोर्ट में बैठते हैं तो हमारी जो है वो हर एक हता के इशारा नज़र सब चीज़ें नोट हो रही होती हैं। पार्टीज जो होती हैं, लिटिगेंट्स जो होते हैं, वो बड़ा ही गहरा अभ्यास और ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। हमें तो ये भी हता कि कानून में ही बताया गया है कि अगर आप किसी एक को अगर हंस के किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो दूसरी साइड को भी देना है। ये रिक्वायरमेंट है लॉ की, यू हैव टू कीप बोथ द साइड्स इक्वल। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और बॉडी और कनेक्शन का मकसद जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, वेरी सिंपल, कि हम सोच कुछ और रहे लेकिन हमारी जो है वो फिजिक्स जो है वो कुछ कहीं और है, हमारा जहन कहीं और है। तो इन दोनों की यूनियन ज़रूरी है एक गुड रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है। बेसिक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को है। ऑब्वियसली हम ये सोचते हुए बड़े हुए हैं कि माइंड एंड बॉडी दोनों ही ज़रूरी होती हैं इंसान के लर्निंग के लिए, उसकी एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए एंड सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को वो कर दूं कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी ऐसा वर्ड लगे जो कि आपको लग रहा है कि जार्गन है, so you can raise your hand and you can ask question, and my colleague will help me to he can interrupt me, and because मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसका जो टेम्पो है वो थोड़ा सा स्लो रखें, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड, लाइक रियली अंडरस्टैंड इनटू द कोर ऑफ व्हाट माइंड एंड बॉडी कनेक्शन इज, राइट? सो कोई भी चीज कंफ्यूजिंग हो, आपने आगे नहीं करना, आपने मुझसे दोबारा पूछ लेना है, राइट? ओके, सो सबसे पहले वन लाइनर आप लोग को मैं दे दूं अबाउट माइंड। हम सब को लगता है कि माइंड जो है वो यहां पे है, राइट? हियर इज माइंड, राइट? बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। यहां पे हमारा जो होता है वो ब्रेन होता है, राइट? इट्स एन ऑर्गन, एंड माइंड इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स योर ब्रेन। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे आपके पास पीसी है जो कि आप यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर है जिसको आप टच कर सकते हैं, इट्स टेंजिबल, बट उसके साथ साथ एक उसमें चलने वाला सॉफ्टवेयर है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बताता है कि तुम्हारे पास रैम कहां पे है, प्रोसेसर कितनी है, तुमने कब स्टार्ट होना है, कब रीस्टार्ट होना है, सो एंड सो फोर्थ। सो इट्स द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। सो ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड दैट रन्स अटॉप ऑफ इट इज द सॉफ्टवेयर। और हम आज ब्रेन के बारे में नहीं, माइंड के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट? सो वी एज ए ह्यूमन स्पीसीज, आप लोग को थोड़ा सा ये होगा कि जहन जो है, यानी कि माइंड को हम जहन के तौर पे करते हैं, ब्रेन इज द वी कॉल इट दिमाग। सो जहन जो है वो, आप लोग को हैरत होगी इस बात जानने में कि एक सेकंड में 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ये इंजेस्ट करता है। 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेकंड में, राइट? लेकिन हमारा जहन उसमें से क्या अखज कर पाता है, यानी कि किस चीज को प्रोसेस कर पाता है, दैट इज नॉट मोर देन 128 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि आप जो देख रहे होते हैं वो 10 मिलियन बिट है,
और जो आपको समझ में आ रहा है दैट इज 128 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन आप तीन उसूल के मुताबिक जो है ना वो आप इसको हार्नेस कर रहे होते हैं: डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन। राइट? delete, distort, generalization. These are the three important, a perimeter that you harness and that you ingest over the period of time. A quick example. आपने मैं आपको अभी आपको मैं कहूं कि आप देखिए, अब जब आप जाएंगे या कल आप जब ऑफिस के लिए जाएंगे, आपको लाल गाड़ियां बहुत नजर आएंगी। ठीक है? आपको लाल सेडान बहुत नजर आएंगी। एंड आप देखेंगे, कल आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऑल ऑफ सडन आपको ऐसा लगेगा कि ये लाल गाड़ियां शहर में ज्यादा हो गई हैं या मुझे ज्यादा नजर आ रही हैं। राइट? सो द मैजिक इज कि ये पहले भी थी, बट आपका इनके ऊपर फोकस नहीं था, क्योंकि आईज इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंजेस्ट कर रही होती हैं कि उसको पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबकी सब हार्नेस कर जाएं, सबकी सब स्टोर कर जाएं। तो आपको अपना माइंड ट्रेन करना होता है, हर वो चीज जो आपके काम की है वो आपने इंजेस्ट करनी है, और हर वो चीज जो कि आपके काम की नहीं है वो आपको डिस्टोर्ट पे ले जाएं उसको, या डिलीट कर दें उसको। जनरलाइजेशन में भी ना डालें, बिकॉज जनरलाइजेशन में भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पॉकेट। ठीक है? सो इट्स जस्ट a bit scratch of what mind is. एक बात मैं वाजे करते चलूं कि माइंड बॉडी कनेक्शन इज अ वेरी डीप एंड वेरी ह्यूज टॉपिक, राइट? We will try to understand the very principle of what mind and body connection is. We will scratch the surface of it, right? आज के दिन, and then we will try कि हम इसको किस तरीके से as much as possible इसको हम harness कर पाते हैं। Now, um, our first component is exploring the mind-body connection to stay emotionally fit for code, right? Like I said, mind is pretty much everything. If you don't have a healthy fit mind, you cannot do pretty much anything at all, right? So mind is supposed to be present. Mind is supposed to be there, no matter what, right? So what mind-body connection is? The mind-body connection is the belief and link between a person's thoughts, attitude, behavior, and their physical health. Our body responds to what we think, feel, and act. While scientists have long understood that our emotions um, can affect our bodies, we are just now beginning to understand how emotions influence health and longevity. ठीक है? यानी कि माइंड बॉडी कनेक्शन का जो डायरेक्ट ताल्लुक है सबसे पहले आपकी हेल्थ से। ठीक है? आप लोग को एक छोटा सा मैं फिलर दे दूं। आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होने वाली जितनी बीमारियां हैं, उसमें से 90%, ओवर 90% बीमारियां जो ट्रिगर होती हैं वो आपके जहन से होती हैं। ठीक है? आपका जहन सबसे पहले डिस्टर्ब करता है आपके मैदे को, और आपका मैदा पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। बिकॉज डिजीज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, इट्स एन एनर्जी। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, रूल फॉर द एनर्जी इज दैट it cannot be created nor be destroyed, it can just be transformed from one medium to another. So the seed for that disease is within you, it's just there. उसको ट्रिगर कौन करता है? उसको ट्रिगर हालात करता है। उसको ट्रिगर आप अगर अपने माइंड को इंटैक्ट लेके ना चलें तो वो चीज को ट्रिगर करती है। सो ये इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, राइट? It affects your emotions, it affects your feeling, how you feel things, right? Your health can affected by the stress from your life experience, whether they are good or bad. Example: promotion or layoff, marriage or divorce, purchasing or selling a house. um, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कोई प्रॉपर्टी परचेज भी की होगी, कुछ लोगों ने सेल भी की होगी। बेशक वो स्पेयर प्रॉपर्टी हो, लेकिन जब आपने नोट किया है कि जब आप कोई चीज सेल कर रहे होते हैं तो हाउ यू फील अबाउट इट, बिकॉज इट देयर वाज अ टाइम इट बिलोंग टू यू एंड नाउ यू आर गिविंग इट अवे टू समवन एल्स। अपनी गाड़ी की बात कर लें, इसी तरीके से कोई कोई नए रिश्ते की बात कर लें। आपके घर में किसी का रिश्ता हो रहा है, कोई नया फैमिली मेंबर आ रहा है घर के अंदर, and so on and so forth. You feel excited, you feel good, and then there are times you feel down and you feel depressed, and then
you feel stress. Okay. One quick note, आप लोगों में से सब लोग अभी जितने भी लोग हैं, ठीक है, आई वुड वांट यू टू डू दिस, लाइक अपने जो शोल्डर्स है, उसके जो कॉलर बोन्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको ऐसे प्रेस करें उसको ऐसे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस विल फील दैट दे आर स्टिफ. ठीक है, दे आर स्टिफ. एंड व्हाई दे गेट स्टिफ? क्यों सख्त हो जाते हैं ये? बिकॉज स्ट्रेस सबसे पहले आपके यहां पे आता है. This is the section, so it's a quick litmus. Whenever you have this feeling, आप इसको चेक करें और उसको बताएं कि बेशक you can express your feelings in chat if you don't want to interrupt, and my colleague will let me know. So ये आपको क्यों वो करता है? ये इसलिए करता है आपको क्योंकि आप स्ट्रेस हैं, ठीक है, और वो लोग जिनको ये स्टिफ नहीं है, इट मींस दे आर नॉट स्ट्रेस राइट नाउ. इसका ये मतलब नहीं कि वो स्ट्रेस कभी जिंदगी में नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि राइट नाउ दे आर इन अ वे बेटर मूड, इन अ वे बेटर एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ समथिंग, राइट? So this is a quick note. So we'll talk about it a bit more in detail, but I'm just scratching the surface for now. It also can be affected by daily routines such as fighting, rush hour, traffic, reading, or listening negative news, meeting a deadline, unrealistic self-expectation, and interpersonal relationship. Imagine कल कल को कोई गवर्नमेंट से कोई डायरेक्टिव आता है that what, government wants you guys to do the double time in order to do your cases in court, और अब आपको 12 घंटे केसेस सुनना है. अभी आपने वो केसेस सुने नहीं हैं, अभी वो मामला आया नहीं है, एकदम से यू विल फील दैट एज इफ समवन और समथिंग हैज हेल्ड यू, किसी चीज ने जैसे जकड़ लियो आपको, राइट? जस्ट एक चीज सुनने से, बिकॉज व्हाट यू डू when you hear something, you imagine it, and when you imagine it, you make it real over here, right? Negative news, I mean, आप लोग सुबह, आप लोग की I'm sure routine ये होती होगी, नाश्ता करते होंगे. Majority of you guys read newspapers or TV. Rule for the mind is garbage in, garbage out, right? That's how our mind works. You are what you eat and you are what you see. So आप जो देखते हैं और जो खाते हैं, आप वो हो जाते हैं, whether you like it or not, unless you don't manage it, right? So खाने से मुराद ओरली खाना भी, और आंखों से इंजेस्ट करना भी, और कानों से सुनना भी, ये हमारी खुराक होती है, राइट? सो नेगेटिव न्यूज हम पे बम्बार्ड हो रही होती है. ट्रैफिक, यू नो आप बेशक गाड़ी ना भी चला रहे हैं, बट ये जो कंसेक्यूटिव एक पेट्रेन आपको बार बार गाड़ी रुक रही है, जा रही है, एंड ऑल दैट, ये आपको जो है वो फटीग देती है, राइट? सो हैविंग सेड दैट, माइंड बॉडी कनेक्शन के अंदर this is just barely me scratching the surface. Now let's do a very small activity. Okay. um, so imagine, okay, I'm sure you guys would have a piece of paper or something right before you. मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ वर्ड्स लिखें जो कि इंटरकनेक्टेड है आपस में, राइट? फॉर इंस्टेंस आप लिखें पिस्टल या पेन, ठीक है, हैमर हथौड़ा, ठीक है, या जस्टिस, हैश और सिरिंज, or could be anything. You know what I mean, just write these words, और कोशिश करें कि आप लोग जो वर्ड्स लिखें वो सबसे पहले लिख लें, और फिर आई वुड वांट यू टू शेयर विद मी, एंड आई वांट लाइक डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम यू गाइस. आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, जो भी आपने लिख लिया हो वो चैट बॉक्स में लिख लें. कोई भी दो वर्ड्स आप लिखें, और आप उसको लिखते हुए मतलब लाइक
पेन पे जो भी आपके जहन में फीलिंग्स आ रही हैं उसको नोट कर लें, एंड देन आई विल आस्क एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ठीक है, आप लिख लें वर्ड. Could be hammer, could be justice, could be, hash or syringe, pistol or police, pen, whatever. I mean, whatever comes to your mind. जो भी पहली चीज आ रही है, I just want you to write that down. Okay, so we'll take 2-3 samples over here. Now, tell me the equality and justice. आप माइक ऑन करके मुझे जवाब दें कि जब आपने ये वर्ड लिखा equality and justice, what comes to your mind? What was the first thing that came to your mind? It could be a picture, it could be something. I mean, I just want you to, express yourself in words. Equality and justice. सर इक्वलिटी जो है वो जस्टिस से रिलेटेड है, बराबरी के बगैर तो इंसाफ हो नहीं सकता, तो मेरे माइंड में ये आई। नहीं, आपके माइंड में पिक्चर क्या आ रही थी? देखिए, जब आप लिखते हैं आपके जहन में, हमारा जो जहन है ये विजुअल्स के फॉर्म में काम करता है, राइट? तो जब आप ये लिख रहे थे आपके जहन में फीलिंग क्या आई? हाउ डिड यू फील? व्हाट डिड यू फील अबाउट इट? जहन में पिक्चर क्या आई? आई जस्ट वांट यू टू गो अ बिट डीपर इन द स्टेट. ऐसे सर ऐसी कोई डेप्थ ही नहीं, मैंने ये लिखा इस वजह से क्योंकि ये दोनों आपने कहा ना कि दो वर्ड्स लिखें जो रेलेवेंट हो एक दूसरे के साथ, तो मेरे जहन में ये पिक्चर आई कि ये दोनों वर्ड रेलेवेंट है, क्योंकि राइट, जस्टिस और बराबरी तो एक साथ ही है। राइट, राइट. थैंक यू. How about home and peace? Sir, I've written these Home two and words peace. as when we are at home, we are in very peaceful environment. Our mind is also at peace. Our body is also at peace. Right, right. Perfect. So, what about the happiness? और ये फहमीदा साहिबा ने लिखा है कार एंड ट्रैवलिंग. Can you please elaborate? Yeah. Miss Femina, can you come on the mic and exactly express your feelings, because I have to hear your tonality. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you hear me? Yep, loud and clear. जी, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे एक्चुअली पर्सनली ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, Okay. तो ज़ाहिर है उसके लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे Right. जहन में यही आया कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, ज़हनी तौर पे उसे एक ब्रेक चाहिए होता है। तो उस टाइम पे लॉन्ग जो है आपको ड्राइव पे जाना चाहिए या ट्रैवलिंग करनी चाहिए, ताकि वही आपने कहा ना कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाली चीज़ है कि बिल्कुल बहुत ठीक ज़्यादा है. चीज़ें आपके दिमाग में जमा हो गई हैं, अब आप Right. एग्जॉस्ट हो गए, Right. अब आप उनको निकालना चाहते हैं ताकि आप दोबारा जो है एक एनर्जी के साथ आके काम कर सकें। True. Thank you so much. So now let us see कि आप लोगों ने जो वर्ड्स लिखे ये इंस्पायर कैसे होते हैं. ये इंस्पायर ऐसे होते हैं कि आपके जहन में 4 अदद पोर्शंस होते हैं, राइट? जस्ट bear with me. It's a bit technical, but just bear with me. So first portion is unconscious mind, and then subconscious mind, and then critical factor, and then conscious mind, right? Conscious, critical factor, subconscious, unconscious. Now हम जब कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आ रहे होते हैं, कोई चीज़ इंजेस्ट कर रहे होते हैं, बाय आवर एक्सपीरियंस, बाय अदर एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें हमारे शऊर में नहीं होती हैं लेकिन वो हमारे तख्ते शऊर में चली जाती हैं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, एंड थिंग्स दैट इज इन योर सबकॉन्शियस इज देयर फॉर एवर, लाइक इट्स देयर फॉर एवर. समटाइम्स आप वो याद नहीं कर पाते लेकिन वो फिर भी वहीं पे ही होती है, राइट? सो हैविंग सेड दैट, जब आपको कहा कि आप इस इवेंट के हवाले से कोई 2 वर्ड लिखें, दिस थिंग दैट वाज इन द सबकॉन्शियस दैट समहाउ हैमर्ड यू टू कम आउट लाउड, ये मैंने इसको ट्रिगर किया, आई ट्रिगर यू गाइस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट? So for instance, एक हमारे पास आया equality and justice, this was the most desired thing
in his subconscious. Equality and justice. There might be a whole story behind that. Let's not go into that. But that was like, keep rotating in his subconscious. Now, when I triggered it, it came out. Traveling, for instance, right? Traveling came out because, that was there spinning round and round in your subconscious. Maybe you wanted to have break. Maybe you wanted to have traveling like now, or maybe you have been looking for it since last couple of weeks or so, right? But it's there, it needs to come out. And ये कब खत्म होगा? जब ये काम पूरा हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि ये फुलफिल हो गया. याद रखें, fulfillment of a desire is a death of desire. ख्वाहिश का पूरा हो जाना उसके मर जाने के मुतरादिफ होता है. तो अगर कोई चीज है, सलामत है, तो इसका मतलब यह है कि that is pretty much intact, right? Just like that, हमने happiness वो किया. Happiness is something that is desired by us all. Who doesn't want to be happy? कोई sane इंसान ये कहेगा कि I want to be happy, obviously, right? But for some reason, something is being obstacle for the happiness. That's why it's there, right? So our words, ये एक छोटी सी activity थी for you to harness के how it affects. Now, let's do a very short activity more. And, I would want you to tell me that, just hear my question and close your eyes. All of you can close your eyes for a couple of seconds and just hear me. Imagine you are in an uncomfortable environment. Imagine that. It's a very uncomfortable environment, any environment which makes you feel uncomfortable. And you cannot say what seems right to you. And you've performed some task in your criminal justice work you do not want to do, right? The things that you have to do, you just perform the task that you don't want to do. Now, how this situation will make you feel? How does it feel mentally, psychologically? आपकी बॉडी पे क्या इसका इफेक्ट? सोचें इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है. हाथ भारी हो रहा है आपका, शोल्डर स्टिफ हो रहे हैं आपके, फोरहेड पे आपके दर्द हो रहा है, whatever. And if any of these feelings could manifest in your physical form, what could that be, right? Now imagine and share. I need like 3-4 samples. जब हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. तो ये होता है कि कोई फेशियल एक्सप्रेशंस कोई अपना छुपा देता है तो किसी की ज़ाहिर हो जाती है. तो आई एम वन ऑफ दैट कैटेगरी के फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ हो रहा है या ये कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया है. बाकी पसीने वगैरह वाली सिचुएशन नहीं होती है और ना ही कोई क्या कहते हैं कि स्टिफनेस होती है. मगर ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि ये बंदा जो है ये अजीब सी सिचुएशन में आ गया है. राइट. सर, एक तो इरिटेशन ज़्यादा होगी और हर वक्त स्ट्रेस में रहने के बाद हम अपनी सिचुएशन को भी उसी से दोस्त की सिचुएशन में कंसीडर कर सकते हैं कि हम खुद ही पतले दुबले हो जाएंगे बिल्कुल ही. डेफिनेटली जो भी वर्क स्ट्रेस जहाँ पर ज़्यादा होता है. जी, ये बिल्कुल उस तरह की सिचुएशन होती है जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई बंदा खड़ा हो पिछले 3 घंटे से, ट्रेन आए और उसकी अचानक आंख लग जाए और उसको पता चले कि ट्रेन जा चुकी है और अगले 12 घंटे तक यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी. राइट. एक फियर का एहसास भी होता है. perfect. और उसके अलावा I'll take one more sample. फियर का एहसास कैसा होता है? सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी. फियर का एहसास कैसा होता है? जी, मतलब क्योंकि आप जाना चाहते थे और कहीं आपको पहुंचना था टाइम पे, वो चीज़ नहीं हो सकी और आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है फिलहाल. आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप कोई दूसरी गाड़ी करा के चले जाए और आपके पास टाइम भी बहुत कम है क्योंकि आपको पहुंचना था और वो ट्रेन आपने मिस कर दी.
फियर का एहसास तो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ कई लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक और है। अगर अगर कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, तो डेफिनेटली उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। और नहीं True. है तो इस तरह की चीज़ें होते होते ये इस तरह की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और शुगर तो तकरीबन हमारी फील्ड में जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को है, हम्म तो वो वक्त से पहले हो जाती हैं। मतलब आपकी एज नहीं है लेकिन आप डायबिटिक भी हैं और आपको जो है स्ट्रेस भी है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हुआ है आपको, तो आप पिल्स पे भी चले जाते हैं, मेडिकेशन पे भी चले जाते हैं। तो आप उस राइट। तरह से ज़ाहिर नहीं, आपकी बॉडी भी उस तरह काम नहीं करती जिस तरह आप पहले होते। आपको तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि आप कह रहे हैं कि इन एफिशिएंसी की तरफ चले जाते हैं बिकॉज आपकी बॉडी जो है डेफिनेटली, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती। ठीक। क्योंकि फिर आपको सेहत को भी देखना पड़ता है अपनी को। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। He also had his hand raised. या जी सर, ऐसी सिचुएशन तो मेरे साथ तो मतलब नॉर्मली पर्सनल लाइफ में जो चीज़ हर्ट करती है वो इग्नोरेंस होती है, और प्रोफेशनल लाइफ में आपके जब एफर्ट्स को डिस्करेज किया जाता है या इवन उनको इनकरेज नहीं किया जाता, तो ये चीज़ मेंटली हर्ट करती है। ठीक है ना, ये एक रियलिटी है। अब मेरे साथ तो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाना है किसी का, और आप एक सिस्टम में खुद को जो ना सोसाइटी में मतलब अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपके आपके एफर्ट्स को, आपके काम को नहीं सराहा जा रहा, मींस बाय एनी मींस, वो आप समझ रहे होंगे कि फील होता है राइट जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेंज है ना, और यू हैव नो से हियर। राइट। और ये अल्टीमेटली आपके वर्क को, आपकी जो है ना, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी वहाँ पे एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसको रिकवर करने में मतलब टाइम तो लगता है, मतलब ये होता है। अगर जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, अगर वो आपके लिए कन्वीनियंट कंड्यूसिव नहीं है, तो ये चीजें होती हैं अल्टीमेटली। जी सर। राइट राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप लोग बाकी लोगों ने भी ऑब्वियसली कुछ कुछ सोचा होगा, बट ये मैं 3-4 सैंपल्स मैंने ले लिए। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट यू कैन रिलेट टू दैट। देखें, आप सब लोग यहाँ पे, आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई मीन आई कैन लिटरली फील इट एंड आई कैन लिटरली sense the kind of responsibility that you have, and it's very very sensitive work. और ये बिल्कुल नॉर्मल है आप लोगों का इस तरफ थक जाने का एहसास, इनएफिशिएंसी का एहसास होना, बिकॉज आप लोग को पता नहीं है कि इसको नेगेट कैसे करना है। बिकॉज देर इज नो मैनुअल फॉर माइंड, एटलीस्ट हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनल करियर में मिला नहीं कोई। माइंड स्टडीज आर still new, to be frank. It's like decade or 2 decade old. It's what different than psychology a bit. So facial expression से सामने आ जाना, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। नॉर्मली ऐसे ही होता है, किसी शख्स ने मुझे कोई बुरी बात कही, मेरे चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर होना शुरू हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। बट इसको हम इनकाउंटर कर सकते हैं, राइट? I'll just explain the things and फिर उसके ऊपर मैं आपको छोटी सी वो देता हूँ। इसी तरीके से इरिटेशन हो जाना, मतलब लाइक यू गेट इरिटेशन। एक हमारे पास वो आया, उसका क्रक्स निकला था कि इरिटेशन हो जाती है व्हेन यू फील सच सर्कमस्टेंसेस। सो it's normal. It's a normal human feeling, and it's completely all right. It's completely all right for you to have it, right? इनएफिशिएंसी ऑब्वियसली अगर हम इसको नेगेट नहीं करेंगे तो इनएफिशिएंसी आएगी, बिकॉज ये जो हमारा शोल्डर है, इस पे हमने एक बैग रखा होता है, इट्स अ वेरी वर्चुअल बैग, और हम हर बुरा एक्सपीरियंस इस बैग में संभाल के रखते हैं, जो कि हमें उठा के फेंक देना चाहिए, हम इसमें संभाल के रखते हैं, जो कि वेट बढ़ाती है आहिस्ता आहिस्ता, राइट? इनएफिशिएंट कर देती है। एंड लास्ट हमारे पास आया था कि रेफरेंस
को जब डिस्करेज किया जाता है तो उससे भी आपको हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है, आपको वो होता है. व्हेन यू थिंक दैट यू आर राइट एंड स्टिल यू नो यू गेटिंग डिस्करेज, ऑब्वियसली वो करेगा. देखिए हमारा जो सीना है इसके ऊपर एक कीबोर्ड है, एक जाइंट कीबोर्ड है जिसमें बहुत सारे बटन हैं. There is a button to make you cry. There is a button to make you laugh. There is a button to make you happy, sad, get upset, and on. मैं सोसाइटी का दूसरा शख्स आपके पास आऊंगा और बटन दबाऊंगा, मैं कहूंगा मिस फहमीदा, आई वॉन्ट यू टू क्राई. लाइक आई हैव नो राइट टू command anyone's body, anyone's mental capacity. But I'll push that button and magically he or she will get effect of it. इसी तरीके से जैसे कहा इरिटेशन हो जाती है, button to make you irritate. Now, how do we insulate ourselves from that? हम बातें सुने, प्रोसेस करें, फीडबैक लें और उसका जहर निकाल के फेंक दें. There is I'll try to make you a checklist जो कि आपके साथ इंशाअल्लाह ताला आई होप के लाइफ तक रहेगी. एंड यू विल if you gauge yourself accordingly, you will be in a better position, way better position to be frank. And ये मैं आपको मॉड्यूल 4 के एंड में बिल्कुल मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा. एंड आई विल टेल यू थिंग्स टू हाउ टू डिटॉक्स योरसेल्फ. अपने अंदर से वो जहर कैसे निकालना है जो कि मास्टर ने आपके अंदर भरा है. बिकॉज बहुत नाजुक सी चीज होती है दिल, और उसको हम हर बुरी चीज से डाल डाल के भर देते हैं और बहुत बड़ा हो जाता है. एंड इट बिकम पॉइजनस. We don't want that. No one wants that. So you can get rid of it. It's your body. No one can make you irritated unless you don't want to get irritated. No one can make you fearful. No one can make you express your feelings. ठीक है? Unless you don't want to. क्यों पता चल जाता है? बिकॉज वर्ड्स जो मैं अभी जो बात कर रहा हूं, दिस इज जस्ट 8% of the communication. 92% of communication, I'm doing it unconsciously. Normal person does it unconsciously. Over the period of time, I've learned to, make the 92% of the communication consciously as well. वो क्या होती है? 52% your physiology and 38% your tonality. Physiology and tonality. For instance, आप में से किसी ने कोई जजमेंट दी एंड यू गाइस आर लाइक सलमान साहब जजमेंट कैसी थी हमारी? लाइक या इट वाज गुड. व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट? मैंने कहा इट वाज गुड, बट यू न्यू इन योर हार्ट दैट आई डिडंट मीन दैट. और आई कैन से it was amazing. I cannot even describe my feelings. It was great. Words एक ही हैं. फिजियोलॉजी, टोनालिटी ने पूरे पैगाम का जस्ट बदल दिया. That you need to understand, right? Right. Totally. So, like I said, I mean, it's ये थोड़ा सा मुश्किल वो है इसको एकदम से इंजेस्ट करना. बट मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होती है. ये माशरे के कंट्रोल में होती है. ये जब आप बच्चे होते हैं आपके वालिदैन के कंट्रोल में होती है. जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके दोस्तों के, आपके भाई बहन के, आपके पार्टनर के कंट्रोल में होती है. देन आपके बच्चों के कंट्रोल में होती है. ठीक है, ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म है. लेकिन ऐसा बनाया नहीं गया है हमें. ये हम इसका कंट्रोल ले सकते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस. देयर आई एम जस्ट बियरली स्क्रैचिंग द सरफेस, ताकि मैं आपको साइड साइड से वो चीजें समझाने की कोशिश करूं जिससे आपको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चीज जो है वो समझ में आए. ठीक है, टोनैलिटी. अच्छा, टोनैलिटी का मतलब ये है कि मेरी आवाज तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज की टोन कैसी है, इसका पिच कैसा है, इसका टिम्बर कैसा है. यानी कि इट्स गुड, योर जजमेंट वाज गुड. I could say that, Abdul Shakur Saab, that your judgment was really good. What did I do? Just because of my tone, you know that I don't mean कि आपका judgment अच्छा था. Instead, I was like, your judgment was good. Same words. Because of tone, it's different.
And you being the judges, you have a lot of role to play in tonality and in physiology. A lot. It takes a time. It takes mastery to achieve. But you can have it. Yeah, got it. Thank you. So now let's move to science of the mind and body control. So scientific studies are constantly revealing that hormones and neurotransmitters, chemical messengers associated with emotion, can also have physical effects. Your body responds to the stress and to anxiety or depression. They can affect our blood pressure, heart rate, sleep patterns, fatigue, constipation, shortness of breath, and even our appetite. आपको पता है constipation, shortness of breath and fatigue number one cause है stress का. Yeah. So I was saying that like I expressed that your body responds to stress and anxiety and depression. Like I was telling you, constipation and shortness of breath and fatigue. These are the three things that are directly in link with the mental stress, and especially the second point, unable to break your mental state, which is keeping you in loop of perplexity. When you are in perplexity, it's like an infinite loop. It's a never-ending loop unless you don't solve it, or unless you sometimes you don't even solve it and you keep it in your subconscious and it's still there, और वो आपके अंदर बिगाड़ कर रहा होता है, right? So स्टेट ब्रेक बहुत जरूरी है, राइट? स्टेट ब्रेक क्या होती है कि आप किस तरीके से एक मोड में हैं और अपने आप को दूसरे मोड में लाएं, राइट? फॉर इंस्टेंस you can change how you are feeling right now, or you can change how you want to feel right now. We'll elaborate it a bit more in coming up slides. Now let's go for the emotions. Emotions, intense feeling caused by an event, however brief, accompanied by the expression and action-oriented. Emotions can be triggered by something external, from seeing a friend suffer, or watching a movie, or something internal, or an upsetting moment. Could be a news story as well, right? A news story that moves you, that makes you feel touched, right? Maybe a war zone story, maybe a sad story in the society, right? An emotion is a physical state resulting from a stimuli. So, what is a stimuli? Stimuli could be anything. For instance, if you are sad already for whatever reason, let's say कोई आपके surroundings में कोई बुरी खबर पहले से है and that is making you upset. Now, उसके बारे में या किसी और चीज के बारे में एकदम से कोई खबर आ जाए, या कोई और न्यूज ब्रेक हो जाए, या कोई और इवेंट हो जाए, कोई और इंसिडेंट हो जाए, एंड दैट थिंग्स ट्रिगर्स, राइट? वो उसको स्टिमुलस डाल देती है उस चीज के अंदर, यानी कि उसको फैला देती है, एंड देन दिस थिंग विल बिकम अ ट्रिगर. A feeling is your experience of emotion and its context. आपकी जो फीलिंग है वो आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड करती हुई होती है, यानी कि आपके जो इमोशन जो ड्राइव हो रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड करती हुई होती है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ अ प्लेस जहां पे आप दोबारा ट्रेवल करने जा रहे हैं, एंड यू फील डाउन एंड डल एंड जस्ट बेस्ड ऑन वन एक्सपीरियंस, राइट? आप उससे बिल्कुल मूव हो जाते हैं एंड पहले से अपने आप पे वो चीज तारी कर लेते हैं. A thought is all the words you use to describe it. ठीक है? सोच आती है और आप उसको रोक नहीं सकते. ठीक है? हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव नेगेशन एक्सेप्ट नहीं करता. हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे वालिदैन हमें कहते हैं बेटा ये मत करो, वो मत करो. हम अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं ये मत करो, मत करो. हम अपने सिबलिंग्स को बोल रहे होते हैं डू दिस एंड डोंट डू दैट. What is that? It's a negative negation. Brain and mind by design cannot accept negative negation, right? Like you don't go in a restaurant to eat the menu.
Menu is the representation of the food. Food is the reality, not the menu. So basically, you can't think what you don't want to think without thinking about it. Like, आप वो कभी नहीं सोच सकते जो आप नहीं सोचना चाहते बगैर उसको सोचे. तो आपको उसको नहीं सोचने के लिए भी सोचना पड़ेगा in your subconscious. For example, I will ask all the participants, if you guys respect me as a trainer right now, मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप मज़ार कायद को अपने लाशऊर में मत सोचें. ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, आपने नहीं सोचना उसके बारे में. And you can write in the chat box that majority of you, almost all of you who heard my statement have imagined the Mazar-e Qaid in your subconscious, right? Now, how does it work? It works in a way that आप ना सोचने के बावजूद उसको सोचते हैं. So negative negation, thought आती है, आप thought को control कर सकते हैं, right? आप उसको turn कर सकते हैं. You can turn it around, but you cannot stop it. So that's how it goes. Our thoughts often skip labeling the emotions. Yes, it comes in the mind. Perfect. Exactly. So see, that's how magical your mind is, right? ये इसके rules हैं जो कि आप बचपन से लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अब explore करें कि वाकई ऐसा है, you know. So our mind is a very complex mechanism. It's a very powerful computing device present on the face of Earth. So our thoughts often skip labeling the emotions. We say, I feel like I'm not enough, but really, we are expecting or experiencing the emotions of fear and sadness, right? I feel like I'm not enough. Why do I say that? Because I'm feeling fearful, I'm feeling sad, or I'm feeling down. That's why I say, I might not be able to do that. आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए which is very hard to, apparently it looks very hard, and you say, और आप इमेजिन करें आपके करियर में कोई जो पहला मुश्किल केस आया होगा, what did you think about it? I might not be able to do that. Would I be able to do that? These doubts, it comes out of fear or the sadness. Got it? So, like Paul Ekman suggested, 6 basic emotions that you need to worry about. There are a lot of emotions as well along with that, but now, like I said, we are just barely scratching the surface of mind-body connections. Sadness, happiness, fear, anger, surprise, and disgust. Right? These are the 6 basic emotions that we need to, look for. Right? आप अपने इमोशंस को इन 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने की कोशिश करें कि जब भी आप फील कर रहे हैं, इज इट सैडनेस, इज इट हैप्पीनेस, इज इट फियर, इज इट एंगर, और आई एम बीइंग जस्ट डिस्गस्ट, और I'm surprised, for instance. So which one is that? ये आपने वो करना है. अच्छा, एक बड़ा मजे का आया है फहमीदा साहबा का कि मैंने जब पहली कन्विक्शन सुनाई, मैं घर आकर बहुत रोई थी. Right? So now imagine that, you just feel, Miss Fahmiza, you felt it when you just announced the conviction. You felt it so hard that you were unable to disassociate yourself from that conviction, right? Like I said, confusion is one of the subliminal part of the emotion. This is not the particularly a base level of emotion, right? Confusion could come out of fear, or it can come out of surprise or whatever, right? So yeah, I can truly understand you. So I hope that, like, again and again, I would like to express my feelings. कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, you can ask me again. I want you to understand the very core principle of it, because इसी के ऊपर ही हम आगे पूरी इमारत बना रहे होंगे. And inshallah ta'ala, it will be a lifelong experience. If you do it perfectly, you will, it will be really helpful for you guys in years to come or months to come, inshallah.
एक और हमारे पास वो आया है आकाश साहब का कि my hands were shivering at the time of signing conviction. So exactly, I mean, आकाश साहब, मैं आप I can literally put my feet in your shoe, and I can literally just imagine that, how hard it would be for you, just what a sensitive case it could be, right? So it happens, but you have the one of the most difficult job, on earth. Insaf dena, justice karna is not a joke. Is not a joke. It's not reading to people and giving your judgment. It's creating rapport with your people, creating know what's going on behind the scene, go for the level of specificity and so on and so forth. So um, it's a very tough thing to manage. Now, discussion. We are up for discussion now. And what do you think about the emotion that caused? So emotions are usually caused by our thoughts. This means that two people could be in the same situation, but they might feel different emotions because they feel different thoughts. Maybe you have noticed this with your own friend and family. Therefore, it's really important to keep track of your thoughts. So फॉर इंस्टेंस, आप लोग कभी एक्सपीरियंस करेंगे कि एक बेंच में 3 जजेस हैं, एक केस सुन रहे हैं, लेकिन तीनों या दोनों अलग अलग इमोशंस फील कर रहे हैं बाय गोइंग विद द सेम केस, बाय गोइंग विद द सेम एनालॉजी, राइट? और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका एक तो जो माइंडसेट, जिस माइंडसेट के साथ आप आते हैं, प्रिलिमिनरी माइंडसेट, वो क्या है, and how you account it for. Okay, now I want you to again close your eyes. All of you, just close your eyes and just hear my voice with full observation. Try to remember the last time you felt scared. Just try to remember it. How you felt. What was it like? And do you remember what you were thinking back then? So A, you have to remember the last time you were scared as something. And then try to remember what you were thinking back then. Just imagine, feel it, visualize it. Okay, Fehmi Dasaiva, yes. ये मेरे साथ तब हुआ था, अभी कुछ महीने पहले की बात है। मेरा माशाल्लाह जो बेटा है वो अब 8 महीने का हो चुका है। माशाल्लाह। वो अभी पैदा नहीं हुआ था। मेरा 9th मंथ जैसे स्टार्ट होने वाला था, मुझे कोविड हो गया था। Oh my God. और बहुत बहुत सीवियर हुआ था। Right. और तकरीबन हार्डली मतलब 10 to 12 डेज मैं मतलब बेड पे ही थी। वेंट पे बस नहीं गई थी क्योंकि हॉस्पिटल जाने से मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैं वापस नहीं आऊंगी। And what you were thinking back then? क्या जहन में थॉट्स क्या आ रहे थे? आफ्टर थॉट्स क्या आ रहे थे? सीरियसली मैं सोच रही थी कि ये मेरा आखिरी टाइम है। Oh. चले, with the grace of Almighty Allah Ta'ala, you are जी, here. अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा लगता है दूसरी जिंदगी दी है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। बिल्कुल। Great. So, anyone else? Actually, last time I was so scared when my car hit by 2 dogs at the bypass of Umarkot, Miko Khas Road. Oh. And suddenly 2 dogs came on the road and I was speeding at 100 miles per hour. I was just being led to the court and I just hit them with full speed. I couldn't control myself and I was so scared that after pushing my pedals on the brake, I stopped the car. I was so confused कि समझ में नहीं आ रहा था कि कार से उतरूं, क्या करूं, कुछ करूं। तो सामने से जो बंदा था, ट्रक ड्राइवर ही था, उसने देख लिया। उसने मुझे बाहर निकाला। उसने फिर खुद ही कार का बोनेट खोल कर खुद ही
जो है कार चेक की वगैरह चेक की, बम्पर वगैरह सारे गाड़ी में अंदर डाले। फिर उसने कहा कि कुछ नहीं है सर, आप जाएं, गाड़ी माशाल्लाह सही है। तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है। Right. Thank you. I'll take one more example, one more sample. और आप लोग कोशिश करें पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, और हम एज कलेक्टिवली हम अच्छा सा नहीं वो कर पाएंगे। जी सरमद सईद साहब प्लीज। जी सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली वालेकुम पार्टिसिपेंट तो अस्सलाम। नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ गेस्ट। आई एम ओके वॉकिंग एंड आई एम लिसनिंग टू यू, rather watching what you are saying and listening राइट as well. ये बात है 86 की। इट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दादू। राइट। तो हमें हुक्म ये मिला कि सन में से जीएम सैयद को अरेस्ट करना है और ओ ओ उनको हमने कराची भेजना है। ओ ओ उससे पहले मैं गवर्नमेंट को वार्न कर चुका था कि इनका 17 जनवरी को आ रहा है बर्थडे, तो आप इनको दादू में ना आने दें, इनको कराची में ही राइट रोकें। अच्छा, राइट। लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो जिस दिन बर्थडे थी उससे एक दिन पहले हमें कहा कि आप उनको अरेस्ट करें। राइट। चुनाचे हम एक टीम बनाकर और फोर्स लेके वहां गए, तो वहां उस वक्त 5-10 हजार स्टूडेंट जमा हो चुके थे और हम देख रहे थे कि अगर हम इनको अरेस्ट करते हैं तो जिस तरह से वो आगे से रेजिस्ट कर रहे थे, तो थोड़ी फाटक की तरह को 15-20 लोग दोनों साइडों से फिर मारे जाएंगे और हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। राइट। चुनाचे उस वक्त जो फीलिंग थी वो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस के फिजिकल, जो क्रिटिकल स्ट्रेस होती है उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं जो मुझे महसूस हुए। एक तो मुझे बार बार यूरिनेशन की अर्ज हो रही थी, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन। दूसरा, मुंह बिल्कुल ठीक खुश्क है। होता है, कानों में आपको शाय शाय की आवाज आती है और आपके स्टमक में जैसे तितलियां उड़ रही हों वो सूरत हाल होती है। बिल्कुल तो सही। ये हमारे साथ तकरीबन 24 घंटे ये सिचुएशन रही। ऊपर से प्रेशर आता रहा। आखिर जब मैंने ये डिसाइड किया कि नौकरी या नौ नौकरी हम ये काम नहीं करेंगे, तो मैंने जब गवर्नमेंट को रिफ्यूज किया तो उसके बाद ये तमाम सिचुएशन जो थी मेरी नॉर्मल हो गई और मेरे जो फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल सिम्टम थे वो खत्म हो गए। तो जो क्रिटिकल स्ट्रेस होती है वो, उसमें इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं। अमेजिंग। और जी, और क्रिटिकल स्ट्रेस में खास तौर पे जो स्ट्रेस होती है कि आपका कोई लव्ड वन अमेजिंग अमेजिंग। डाइज या कोई किसी किस्म की डाइवोर्स वगैरह का हो जाए, तो वो आपके पर्सनल क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं। उसको आप भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन स्कार मार्क बन जाते हैं। और जैसे आपके चोट का जो जख्म ठीक हो जाता है लेकिन उसके ऊपर बरसात में खुजली होती रहती है, तो इस तरह मेरी सजेशन है कि अगर किसी को क्रिटिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करे तो वो उस किसी साइकेट्रिस्ट से जाकर 1-2 सेशन जरूर लगा ले ताकि उस स्कार मार्क ना बने और फ्यूचर में उसको तंग ना करें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छी सजेशन आपकी। अब्दुल शकूर साहब ने हाथ उठाया हुआ है, सो रेज हैंड किया। अब्दुल शकूर साहब आपसे एक वो ले लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द लेक्चर। सो हमारे पास ये तीन हमारे पास एग्जांपल्स आई हैं एंड मिस फहमीदा ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, in COVID situation. COVID, obviously this is the one situation that take you in fear. It was a bizarre situation when it came. I'm not sure कि आपकी मिस फरीदा फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव में आपको हुआ था, लेकिन अगर फर्स्ट या सेकंड में भी था तो उस वक्त कोविड वाज रिलेटिवली न्यू एंड इट वाज, उसका जो खौफ है वो बहुत ज्यादा था बिकॉज ऑफ यू नो जो वो है क्या कहते हैं उसकी मीडिया बॉम्बार्डमेंट की वजह से उसका खौफ साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा था. So what you experienced was perfectly, normal. Anyone in your place would have, have that position. और ये basic feeling आपकी जो है वो fear थी, basic feeling fear थी, about you, about your family, what is going to happen and all that. So fear आपको drive कर रहा था, right? दूसरी हमारे पास आई जो एक्सीडेंट की थी, एंड
the feeling that came out of it, it was confused. किसी ने पहले कहा था confused भी क्या basic feeling में है, मैंने कहा था कि वो subliminal feeling में है. अब इस केस में जो confusion है, that is out of fear as well. So इसका जो lead node है, that is fear, और उससे आप confused हुए कि you don't know what to do, you don't know how to react, you don't know what to do, and so on and so forth. And Sarma Saab, I mean, that was a really a story that moved me, and really, I mean, sometimes over a cup of tea, I would like to hear the entire story. But what you were experiencing, that was again fear and surprised, both. क्योंकि जो दो अलग अलग आपके जो सेंसेशंस हो रहे थे दैट केम आउट ऑफ दैट, फेयर से भी आ रही थी और सरप्राइज से भी आ रही थी. जो पेट में तितलियां उड़ने वाली जो कैफियत है और एक 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 अनआइडेंटिफाइड बेचैनी वाली, दैट कम्स आउट ऑफ सरप्राइज. रेस्ट बिलोंग्स टू फियर. लेकिन ये वाली जो फीलिंग है, ये बहुत एक एबनॉर्मल हालत में इंसान को ले जाती है फॉर 2 minutes or 3 minutes. एंड एग्जैक्टली, आई मीन, अनकॉन्शियसली यू डिड द राइट थिंग. And now you imagine, I mean, everyone is hearing his story and heard his story. So as soon as he took care of that particular piece of information, everything was gone. All of his feelings, the physical feeling, that was gone. Right? It was a done deal. So you need to tag, track, and then mitigate the basic notion of your emotion. Is it fear, sadness, surprise, or you're being discussed, or whatever? Okay. I hope काफी concept इसके बारे में clear हुआ होगा. Now BKS लेंगे. इन्होंने कहा कि health begins with a firmness in the body, deepens to emotion stability, then leads to intellectual clarity, wisdom, and finally the unveiling of the soul. What a saying, to be frank. I mean, just look at the quote, और ये बिल्कुल जैसे इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए समंदर को कूजे में बंद कर दिए. It affects your intellectual capacity as well, your emotional stability. It affects pretty much everything that's around you. That is you, basically. Right? So, assignment 2A6. Now, your assignment would be that you would have to access the course portal and access assignment section and fill in the assignment form information, submit. And the assignment content, you will see the questions over there. So fill the form by answering the questions provided. Think about similar situation in each question that you had faced in your criminal justice career and describe how you feel and how others feels about you. Related to your post, related to your work. Just और सोचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? Just close your eyes. Why do I ask you to close your eyes always? You know why? Because your body drain almost 47% energy just because of your eyes open, because you are trying to ingest a lot of data which your mind cannot comprehend with. So just close your eyes. You will have a lot of free energy there to work with and attempt the questions. Clear hai ye? Should we go forward? Understanding and practicing emotional regulation to stay focused and objective in judicial and law enforcement matters, right? So identify emotions. Labeling your emotion is an important first step to regulating them. And that's why you need to identify them. Like I said earlier, the part of emotion that you have, you need to go for the very basic node of it. अच्छा, एक बहुत छोटा सा टूल दे रहा हूं आप लोग को. कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में परप्लेक्स्ड हैं, सो या आप उसके लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में चले जाएं या आप लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी में चले जाएं. यानी कि या आप उसको अपने आप से एब्स्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करें या स्पेसिफिसिटी के क्वेश्चन करें. फॉर इंस्टेंस, Femida Saiba could say, I'm sad, and I can ask, why is that? And she's like, I'm feeling lonely, or I'm feeling that I have too much burden, and I'll ask, why is that?
you know, and then why is that, and then why is that. 5 whys you answer yourself and you'll be good to go. Okay, just go to the specificity, just exactly know what you are feeling, what you're regulating, and so on and so forth. Think about the last time you felt that, you know, your heart rate was so high. Your heart rate was so high, like it was riding like a crazy horse. You know, again, close your eyes. Think of a situation in your just square. How was it? What was going on? क्या वो चीज थी? क्या वो विटनेस की आवाज थी? क्या वो विटनेस का कंटेंट था, या उसकी फिजियोलॉजी, या उसकी टोनालिटी? क्या वो चीज थी जिसने आपके हार्ट रेट को ज्यादा कर दिया, या आपको उससे स्वेटिंग होना शुरू हो गई, या आपको पल्पिटेशन होना शुरू हो गई? That unexplainable phenomena where you are unable to comprehend. अब इस दफा कोशिश करें कोई नए पार्टिसिपेंट्स भी आए, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद द इंटायर ऑडियंस. या किसी ने रेज हैंड किया है? काशिफ साहब ने किया, आई गेस. The last time I got such feelings in the court when I was announcing conviction of more than 15, I think 15 persons. I convicted them. My वाह. heart started beating. And जब उनको अरेस्ट करने के लिए हथकड़ियाँ लग रही थी, then I was so confused. क्योंकि वो सारे लोग जो है बिल्कुल अफसरदा थे. But I announced the judgment and they were getting arrested in the court. अच्छा, इस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस टोटल कितना था जब ये आपको फीलिंग हुई थी? काशिफ साहब, आपका क्रिमिनल जस्टिस का कितना एक्सपीरियंस था एट दैट टाइम? More than 5 years, I think. मोर देन 5 years. और अब कितना है आपका? 6 years, 1 year, पुरानी बात अच्छा, है. ये 1 साल पहले की बात है. राइट, राइट. सो राइट, कोई और हमारे पास सैंपल है? जी मिस मेरे फाहमिदा. साथ हुआ था सिंध बार हाई कोर्ट का, आई गेस हाई कोर्ट बार काउंसिल के उस दिन इलेक्शंस थे. एक वकील साहब थे, वो काफी दफा मिस फाहमिदा जी. एडजर्नमेंट एप्लीकेशन जी काफी दफा एडजर्नमेंट एप्लीकेशन मूव कर चुके थे. मेरे पास इस वक्त सिर्फ फैमिली जुरिसडिक्शन है, मेरे पास क्रिमिनल जुरिसडिक्शन या सिविल नहीं है. सिर्फ राइट. फैमिली कोर्ट है मेरे पास यहाँ पे. तो उसमें जो है आए दिन कोई ना कोई झगड़ा और इस तरह की बदतमीजी वकील करते रहते हैं. तो उस दिन ये हुआ था कि हाई कोर्ट बार के इलेक्शन थे और हमें इंटीमेट नहीं हुआ था कि इलेक्शन है. चूंकि अब हम वकील नहीं रहे तो हमें पता नहीं होता किस दिन किसके इलेक्शन है, राइट. जब तक कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर इशू नहीं होता. तो इत्तेफाक से उस दिन जो है मैंने एक मैटर था मेरे पास, काफ़ी टाइम से चल रहा था और एक ही स्टेज पे था, उसमें कोई अपीयर नहीं हो रहा था, मैंने वो डिसमिस कर दिया. उसके बाद जो है मुझे किसी ने आके बताया कि वकील साहब जो है वो इलेक्शन में गए हुए, उनका वोट वगैरह है. तो मैंने कहा हमें तो इस तरह की कोई इत्तला नहीं है, और दूसरी बात है कि ठीक है इलेक्शन अगर हैं तो आप बता के जाएं, मतलब पहले से इंटीमेट कर दें. और आपका तो मैटर ऑलरेडी डिले हो रहा है, काफ़ी डेट्स पे जो है आप नहीं आ रहे हैं. तो आज मुझे जो समझ में आया, मैंने काफ़ी देर वेट किया, मैंने उसको डिसमिस कर दिया क्योंकि पार्टी भी मौजूद नहीं थी. राइट. तो उस पे वो वकील साहब आ गए, जो हाई कोर्ट गए हुए थे वो पहुंच गए. मतलब मैंने दूर से देखा वो अजीब ही तरीके से आ रहे थे कोर्ट में चलते हुए, और आते के साथ ही मेरी एक बात नहीं सुनी और मतलब शुरू हो गए बदतमीजी के ऊपर बदतमीजी किए जा रहे हैं. 1 घंटा उन्होंने तकरीबन मुझे कन्विंस करने की कोशिश की और आखिर में हाथ जोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने राइट. कि राइट. प्लीज इसको जो है रेस्टोर करें, ये करें वो करें. मैंने कहा वकील साहब जो होना था अब तो हो चुका है, अभी तो ये नहीं हो सकता, अभी ये मुमकिन नहीं है. आप जाएं, इलेक्शन आपका है, वहां पे आप वोट वगैरह कास्ट करें, उसके बाद आराम से आप आए, एप्लीकेशन मूव करें, मैं सुनती हूँ और सारी चीजें करते हैं. उन्होंने फिर मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मैं डीजे साहब के पास चला जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो चले गए. मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है, आपको जो समझ में आता है, जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो किया है. अब जो आपको इस वक्त समझ में आ रहा है आप चाहे वो करें. वो चले गए, उन्होंने मेरी शिकायत की नीचे से, और उसी वक्त इत्तला आ गई कि जी किसी के खिलाफ कोई जो है ऑर्डर पास नहीं करना है, और क्योंकि आज इलेक्शन है तो
कोशिश करें कि जो खुद अपीयर हो रहे हैं ठीक है उनके केसेस चलाएं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में एप्लीकेशन मूव हुई और वकील साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए मेरे सामने। तो ये वाली सिचुएशन बहुत अजीब थी, मुझे पल्पिटेशन स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो कोई बात सुन नहीं रहे थे और इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कोर्ट में कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। Okay, मेरे लिए वो perfect. सिचुएशन की मैं सुन रही थी तब भी मेरे लिए मुसीबत थी, नहीं सुन रही थी तब भी मुसीबत, दोनों सिचुएशंस मेरे लिए अजीब थी। Right. Okay, I'll take one more sample. Right. शाह साहब, मेरी पोस्टिंग थी छठा में एज एएसपी और बड़ा पीसफुल इलाका था। Right. ये 1983 की बात है। अच्छा। तो उस दौरान एमआरडी स्टार्ट हो गई थी। Right. और एमआरडी में मेरे इलाके में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक जगह है सजावल के पास, वहाँ बठोरो को वियतनाम ऑफ द सिंध कहते थे। अच्छा। बठोरो में इसको बठोरो में बहुत ज्यादा थी मूवमेंट, बड़ी वायलेंट थी और मेरा इलाका नहीं था। अच्छा। तो हमारे एसपी उन दिनों में ट्रांसफर हो गए, नए एसपी आए, वो रैंक में से थे, इमाम अली शाह, बहुत ही ऑनेस्ट और प्रोफेशनल ऑफिसर थे। उन्होंने चार्ज लिया और सीधे बठोरो चले गए। ओके। शाम को मुझे मैसेज आया कि जी एसपी साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। अभी एसपी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने उनको देखा नहीं था। जब मैं एसपी ऑफिस में गया तो मैंने एक देखा कि सफेद पट्टियों में लिपटी हुई कोई शख्सियत कुर्सी पे बैठी है। राइट। इसकी आंखें भी मुश्किल से आंखें नजर आ रही थी। मैंने सलूट किया और मैंने पूछा सर ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं बठोरो गया था, वहाँ जुलूस था, वहाँ का जो एसएचओ है वो जुलूस से मिला हुआ था और जुलूस ने मुझे मार मार के मेरे इतने फ्रैक्चर कर दिए और मेरा जबड़ा भी फ्रैक्चर हो गया। राइट। तो मैंने कहा सर मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे क्यों बुलाया है। उन्होंने कहा आप ऐसे करें, कल सुबह 5-6 तकड़े तकड़े से जवान ले जाएं पुलिस लाइन में से और 5-6, ज्यादा नहीं, 5-6 जवान ले जाएं और वहां जाके बठोरों में उनको बताएं कि एक एएसपी से उनका पाला पड़ गया है। क्या मैं उनको सुनता जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरी हथेलियों में पसीना आया, पाम्स में। उसके बाद मेरी हार्ट बीट तेज हुई। उसके साथ मुझे वही तितलियां और कानों में आवाजें आनी शुरू हुई और मैंने ये ठान ली कि कल मैं शहीद होने जा रहा हूँ। शुरू में ही एक हमारे मलकानी साहब वहाँ शहीद हुए थे, मैंने कहा चले दूसरा मैं सही। तो मैं ये लेकर पुलिस लाइन में पहुंचा, वहां से मैंने 5-6 लोग उठाए और उनके साथ मैंने टीयर गैस वाला एक उठाया और मैं बठोरो पहुंच गया। रास्ते में मैंने सार्जेंट को कहा कि आपके पास जितनी ट्रैफिक की नफरी है उसको काली वर्दी पहना के और लाठियां देकर, उन दिनों में लाठी होती थी, पोलो स्टिक नहीं होती थी, मेरे पीछे भेजे वहां। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पूछा एसएचओ से कि आपने एसपी साहब के साथ क्यों ज्यादती करवाई। उसने कहा सर मेरा कसूर नहीं है, वो तो मुझे मिले ही नहीं, उन्होंने भाग के जुलूस में चले गए कि मैं सैयद हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। जुलूस को क्या पता था कि ये सैयद नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये वाकया हो गया। मैंने कहा आपके पास नफरी कितनी है। उसने कहा सिर्फ मुझ समेत 15 लोग हैं। मुझ समेत 6 हम थे। अच्छा। और जो हमें इतलाएं मिल रही थी, कभी एमआई कभी आईएसआई कभी कोई, वो बता रहे थे कि इस दफा जुलूस ने ये कहा कि हम पुलिस वालों को म्यूटिलेट करेंगे, इनकी डेड लाशों को अगर हमें रोको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। स्ट्रेस अब बढ़ रही है। लेकिन जब मैं मौके पे पहुंचा तो जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो कुछ 20% स्ट्रेस कम हो जाती है। अनसीन का कुछ ज्यादा खौफ होता है, अनसीन जो भी सिचुएशन होती है। अच्छा, अब मेरे पर प्रेशर ये था कि जुलूस बहुत बड़ा था, जो इतलाएं मिल रही थी, लोग कम थे, तो ये मेरे ऊपर प्रेशर था क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, जुलूस बड़ा था। सुनाचे थोड़ी देर में जो मैंने देखा तो एक डला खड़ा हुआ, उसमें से लंबे लंबे 19 लोग उतरे जिनके पास लाठियां थी। तो मैंने पूछा कि आप कौन है, कि जी हम ट्रैफिक वाले हैं, आपने हुक्म दिया था कि पहुंच जाएं। अब मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए और मेरी जो स्ट्रेस थी वो कम हो गई, तो मेरे पास अच्छे कोई नफरी हो गई, 25-30-40 लोग हो गए। और उसके बाद फिर हमने जाके सिचुएशन को, जब जुलूस आया
तो उसकी हमने 2 मिनट में उसको डिस्पर्स कर दिया। राइट ये होता है कि जब सिचुएशन में चले जाते हैं, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, जब आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस का फार्मूला है कि स्ट्रेस इज प्रेशर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, प्रेशर ग्रेटर देन रिसोर्स। इनमें से या आप प्रेशर कम कर दें या आप रिसोर्सेज बढ़ा दें, तो दोनों सूरत में स्ट्रेस कम हो जाती है। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त हमारे पास सैंपल्स आए हैं। सबसे पहले तो हम फहमीदा साहबा का आंसर कर दें कि द सिचुएशन दैट यू वर इन, मिस फहमीदा, आई नो समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल योर ओपोनेंट, बट देखिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सामने वाला शख्स एक एक एंटिसिपेटेड बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मिसाल, अगर मैं किसी पे गुस्सा होऊंगा तो सामने वाले ने गुस्सा होना है। किसी पे मैं बिला वजह टॉन्ट करूंगा तो उसने मुझे अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। नाउ आपको मैंने बताया पहले कि आप अपनी स्टेट ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइम टू द अदर, यू नो, जस्ट यू कैन ब्रेक योर स्टेट। आप गमज़दा हैं, and just think about the time when you were really 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 happy. Just think about, आप गमज़दा हैं, but just think about the time, you know, and you will feel the huge difference. And for certain time आप वो जो गम वाली फीलिंग थी उसमें से निकल के एकदम से मुस्कुराना भी शुरू कर देंगे at some time. That is a state break. एक पोलराइज कैफे से निकल के आप दूसरी कैफे में जा रहे हैं। नाउ आप ये स्टेट ब्रेक सामने वाले की भी कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, यू नो, मैं अगर सामने वाले की स्टेट ब्रेक करना चाहूं, आई शुड गो फॉर अ डिफरेंट कमांड, राइट? I should go for a very different command. Okay, now what I can do, I can just say things that is not expected. बहुत छोटी सी स्मॉल अपना मैं वाकया शेयर करूंगा, बिकॉज व्हेन आई वाज हैविंग माय क्लिनिक इन DHA, एंड मेरे पास एक दोस्त के रेफरेंस से एक साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डांटता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैंने उनके बेटे को बुलवा लिया और साद नाम था उनके बेटे का। एंड मैंने कहा, साद, हाउ ओल्ड आर यू? एंड ही वाज लाइक, आई एम 7। मैंने कहा, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे अबू तुम पे गुस्सा हो, यू हैव टू से, हे डैड, इट्स मी साद एंड आई एम 7 years old एंड आई नो यू डोंट वांट टू येल एट मी, यू नो, आपने मुझ पे गुस्सा नहीं करना। एंड देन ही आस्क्ड मी, you sure, uncle, I won't get in trouble? And I was like, no, no, it will be fine. And then I did the hypnotic induction for his father as well and installed that trigger, you know, whenever he does the straight break. And magically he came to me and he was like, यार अजीब से मेरे साथ काम हुआ है, मुझे गुस्सा आया एंड मैंने कहा कि साथ तुमने क्या कर दिया एंड दिस एंड दैट, एंड एकदम से इसने कहा कि हे डैड, इट्स मी, आई एम 7 years old and I'm your son and you don't want to yell at me. And I was like, I wanted to burst out, and then all of a sudden I smiled. Right? You can state break your opponents. Sometimes अगर उसकी वो है टोन हाई है, लो टोन में वो करके बात जो है ना वो उसको ये एहसास दिला दें यू आर रिसेप्टिव, एंड देन यू नो टर्न हिम अराउंड। ऑलवेज रिमेंबर, की ऑब्जेक्टिव आपका अपना ही होगा, की ऑब्जेक्टिव आपका अपना ही होगा कि आपने अचीव क्या करना है, बट उसकी जो मेथडोलॉजी है वो आपने चेंज करनी है ऑन टाइम टू टाइम, सो दैट यू डोंट गेट प्रेडिक्टेबल बाय योर ऑडियंस जिससे आप इंटरेक्ट करना है। शर्मा साहब का एक्सपीरियंस ये जो ठट्टा वाला था, अगेन इट इज केम आउट ऑफ फियर एंड सरप्राइज, बट नाउ दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट सरप्राइज। जंग में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, ठीक है? वो धुन जो कि जंग में होती है, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट विल बी हैपनिंग इन द सिनेरियो, और उसको हमने मिटिगेट कैसे करना है बिफोर हैंड, बिफोर वी गो देयर। और ये बड़ी मुश्किल कैफियत होती है। सो दिस वाज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट समझ साहब हैड। एंड स्ट्रेस का आपने समझ साहब जो बताया कि प्रेशर जब भी बड़ा होगा उससे जो कि आपके रिसोर्सेज हैं
तो आप हमेशा स्ट्रेस होंगे. इन जनरल यस इट्स राइट. हाउएवर इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि प्रेशर आपके लिए, आपका प्रेशर की लिमिट क्या है, यू डोंट नो दैट. यू ओनली नो वंस यू गो विद इट, राइट? यू ओनली नो वंस यू गो विद इट. अदरवाइज आपको नहीं पता चलता था कि आपकी प्रेशर लेने की सकत क्या है, कितना ले सकते हैं. इंसान जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. इस हवाले से इट्स अ वेरी सुप्रीम मशीन, इफ यू विल, राइट? सो state break, use the state break. It works like magic. I cannot even stress it enough. ठीक है, आप दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, राइट? So this is one thing to keep in mind. समझ में आया आपको? I hope so far I'm making sense. And अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन आया, हाउ जज साहब वाज सपोज टू ब्रेक द स्टेट ऑफ एन एंग्री एडवोकेट अगेंस्ट whom an order has been passed and he is bar dignity. Okay, so for instance, मैं बहुत क्योंकि टाइम थोड़ा सा है, मैं आपको मैं बहुत थोड़ी देर तक आपको बता सकता हूँ. सो इन 2 minutes I'd say कि जब भी आपके पास कोई शख्स आया, उस शख्स का नाम है लेट्स से टॉम और हैरी या अमजद साहब हैं कोई, एंड अमजद साहब आए, ही इज अ लॉयर, और आपने उसकी जजमेंट पास कर दी, राइट? एंड वो मेरे पास आए एंड उन्होंने कहा कि सलमान शाह साहब आप बताएं ये आपने क्या जजमेंट पास कर दी, और ऐसे नहीं होता, और आई जस्ट वांट यू टू रीडू इट, एंड यू नो I don't know what to do. I don't know how to express my feelings. Now imagine, what if I say, why would you say that, Amjad Saab? And he was like, why would I say that? Obviously मेरे judgment है and all that. वो दोबारा से repeat करेंगे. And then I can ask him, I want you to take a moment and just tell me how you feel if we swap the seats. मुझे नहीं पता आपके इलेक्शंस चल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे बिजी हैं, right? Just swap your seats with me. How would you feel? And again, just जो टोन है उनकी, it's supposed to be totally opposed to that. If he is higher, you go lower. So इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर एक कमरा है उसमें अगर 10 लोग खड़े हुए हैं और अगर आप बैठ जाएं, so you stand out of crowd. और अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और आप खड़े हो जाएं, again you stand out of crowd. So you have to become an anomaly, right? Whenever you become an anomaly, you register yourself in the people's subconscious, right? So that was again one very little example, but there's a lot to break here. I wish कि ये मुझे ज़्यादा मेरे पास time हो, so I would love to express more. Anyway, so again मैंने पहले भी बताया emotion cause कैसे करते हैं. Emotion are often caused by thoughts. This means that two people could be in the same room, but they might feel different emotions because they have different thoughts. Maybe you have noticed with your own friends and family. Therefore, it's really important to keep track on your thoughts. ये मैं पहले explain कर चुका हूँ आपको, क्योंकि I mean, एक हम बात कर रहे थे उससे कनेक्टेड थी, so that's why इसको मैंने उसी जगह पे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक जगह पे दो लोग एक ही पैगाम सुनते हुए दो मुख्तलिफ इमोशंस या थॉट रख सकते हैं. बिकॉज हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, जज साहब आपको मालूम नहीं है हकीकत में ये चीज ऐसे नहीं, हकीकत में चीज ऐसे है. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस मेटाफोर? आई गेस अ लॉट. जज साहब हकीकत में ऐसा नहीं है, जज साहब हकीकत में ये चीज ऐसी है या वैसी है, एंड ऑपोजिट में वो शख्स दूसरा कह रहा होता है कि नहीं हकीकत में ऐसा नहीं, ऐसा है, ए नहीं बी है, और बी ओ कह रहा था बी नहीं ए है. नाउ हकीकत की हकीकत क्या है? मैंने पहले बताया, योर थॉट्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, दे आर नॉट रियल पर से. मेरी हकीकत आपकी हकीकत से मुख्तलिफ होगी, होगी लाजमी.
और हम दोनों की हकीकत हकीकत की हकीकत से मुख्तलिफ होगी. सो वी बेस our experience and make it our reality. It's not real per se. ठीक है? So there could be an error. Always keep your portion open. क्योंकि fine, ये different हकीकत की बात कर रहा है. Let's hear about it. It might be different. ये लॉयर या ये विटनेस डिफरेंट हकीकत की बात कर रहा है. ओके फाइन. मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ है. यानी कि मेरे एक्सपीरियंस में किसी 4 साल के बच्चे ने कत्ल नहीं किया है, गॉड फॉरबिड. बट लेट्स हियर इट कि ये लॉजिक क्या दे रहा है. जस्ट बिकॉज कि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता. सो डोंट एवर गो फॉर दिस बकेट. Always keep yourself open. Always keep yourself, to know your opponent's reality. मेरे और आपके बीच में imagine करें there is a digit and it's a 9 and you would be like, you know what Salman Saab, it's 6, I swear. And I'd be like, you know what, I swear it's 9. Which one is that? कौन सही है हम दोनों में से? हम दोनों सही हैं. So rule is that we have to respect the people's opinion. We might not agree with that, but we have to respect. Hear it, ingest it, and take gist out of it. इसका fruit क्या निकल रहा है, इसका फल क्या निकल रहा है? And that is the crux. ठीक है? So discussion session again. How emotion are caused. अच्छा, हम जब भी बात करें cause की तो there is one thing that is cause and there is other thing that is effect. Cause and effect. मैं उदास हूं. That is what? That is cause? Yeah, that is effect. मैं उदास हूं इसलिए मैंने आपको बुरा भरा बोल दिया. Now, what would it be? Would it be cause or an effect? Apparently, my sadness is the cause for the effect that I misbehaved. But in reality, why am I sad? What is the cause? You have to understand this notion that what is the cause? It's very, very important for you to know. I mean, it will change your life forever. आपके रिलेशंस चेंज हो जाएंगे, आपकी फैमिली रिलेशंस चेंज हो जाएंगे, आपका प्रोफेशनल करियर चेंज हो जाएगा. एंड चेंज हमारी जात के अंदर से आता है. चेंज बाहर से नहीं आता. यू नो Rumi once said that, I was genius because I wanted to change the world, but I'm wise today because I want to change myself. So what is cause? Again, आपको याद है 5 whys? Why does this happen? Why and why and why and why? Now, एक exercise अलग से as a part-time exercise, I would want you to guys do. किसी भी चीज के बारे में परेशान हो, किसी भी चीज के बारे में परेशान हो, उसको लिखें और नीचे 5 why लिखें. Why 5 times. Okay? And just answer each and then go into the deeper level and then answer the next why. So for instance, मैं परेशान हूं. You can ask me, why is that, Salman? Because I'm unable to perform my work efficiently. And then you can ask, why is that, Salman? And then I say, I don't know, maybe I am unable to keep my track, for time, for my, workload, da da da. And then you can ask, why is that, Salman? You see what I'm saying? You see where I'm going with that? It works like magic. I kid you not. You just do it. You'll enjoy it a lot. So this is how it is. Again, कोई शख्स ऐसा है इस सेशन में, who thinks that मेरी बातें ओवरफ्लो कर रही हैं या समझ नहीं आ रही हैं, because I'm trying to as elaborative as possible, but unconsciously कोई jargon ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, I can take on and then I'll go with the session further. Perfect. Thank you Kashif, for letting me know, and thanks everyone.
This is a session for me and for you both. मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं. We are learning from each other's experience. We as a human, collectively, we learn from each other. Every time that I share my experience, every time that I say something that I want you to understand, and then you will make me understand something else very differently. Right? So we are here to share. And the key is we need to participate as much as we can. So thank you, guys. So now thoughts. Thoughts and emotions have profound effect on one another. Thoughts can be thoughts can trigger emotions and serve as an appraisal of that emotion. Now, what does it mean? It means that thought per se in itself can be a trigger. बहुत छोटा सा मैं एक वन लाइनर आपको दे दूं. अगेन इट्स अ इलैबोरेटिव टॉपिक. आपने एक वर्ड सुना होगा फोबिया. ये फोबिया है, वो फोबिया है. फोबियाज क्या होते हैं? फोबियाज आपके लाशऊर में या तख्ते शऊर में, यानी कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में बैठे हुए वो इवेंट होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के ट्रिगर से जनरेट होते हैं. राइट? मिसाल है, मैं कोर्ट के लिए आ रहा हूं, आपके पास पेश होने आ रहा हूं, लेट्स से एज अ मुल्जिम. और मैं, सिटी कोर्ट है या हाई कोर्ट है, और खुदा ना खास्ता वहां पे मेरा एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं ठीक हो गया, एंड देन मैं वापस, मेरा नेक्स्ट सेशन है. अब क्या होगा अगर अनकॉन्शियसली मेरे जहन में ये चीज बैठ गई है, तो whenever I'll think next time, whenever someone says high court, मुझे लाशौरी तौर पर पूरा वो इवेंट दोहराया जाएगा मेरे सबकॉन्शियस में कि मैं गया था, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था. तो मेरा सबकॉन्शियस मुझसे पूछेगा, सलमान, डू यू वांट दैट कंडीशन अगेन? लाइक, नो, आई डोंट वांट दैट. एंड व्हाट आई विल से, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट स्केयर्ड ऑफ कोर्ट. मैं उस बिल्डिंग से नहीं डरता, मैं जज साहब से नहीं डरता, मैं वकील से नहीं डर रहा हूं, मैं उस कैफियत से डर रहा हूं जिससे मैं दो चार हुआ उस टाइम पे. राइट? ये हाई कोर्ट वर्ड, दिस वन वर्ड इज अ ट्रिगर. एंड I'll tell you tomorrow some of the examples कि कितने बड़े बड़े वाकयात एक छोटे से ट्रिगर से होते हैं. स्लीपर सेल्स का आपने नाम सुना होगा. मुल्क ममालिक में स्लीपर सेल्स बिठाते हैं, एजेंट्स बिठाते हैं. ठीक है, स्लीपर सेल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है? बाय जस्ट वन ट्रिगर, बिकॉज they have been programmed to do one thing again and again in their subconscious through hypnotic inductions again and again, and they just get inspired by one word, by one trigger, and they are active as if कि उनको अभी किसी ने कहा है काम करने के लिए. Right? So emotions and regulations. Emotional regulation refers to the process by which individual influence which emotion they have, when they have them, and how they experience and express their feelings. Being in control of how you feel is essential part of self-control. Like, it is part of you. But this goes for all types of emotion. For instance, Tolstoy once expressed that emotions are but part of perfect decision. They must be balanced with rationality and the act of itself. So, आपका जो इमोशन कैसे आप वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, it came out of by the perfect decision. In practical life, though I would advise you don't go for the perfection, go for the excellence. Okay? Do not go for perfection. Forget about it. Aim for it, but strive for excellence, because you have to keep your low milestones so that you achieve that, you get motivated, and you go for the next one and the next one and the next one. Emotions regulation is the ability to exert control over one's own emotions. Say, it may involve behavior such as rethinking a challenge situation to reduce anger or anxiety, hiding visible signs of sadness or fear, or focusing on the reason to feel happy and calm. So that's what the emotion is,
right? How you regulate it, it comes from within. That you need to suppress that feeling of being anxious or being sad or whatever for now, and then unconsciously you just ride on that road. But once that thing is over, go back and address that emotion. So emotional regulation, I was telling you about the uh, um, emotional regulation. That emotional regulation is the ability to exert control over one's own emotional state. So हमारी अपनी state होती है, and it may involves a behavior such as rethinking and challenging situation to reduce anger and anxiety. Um, you know एक सिचुएशन आई, फॉर इंस्टेंस आपके किसी अजीज ने कोई ऐसा काम कर लिया जो आपके लिए नागवार था, आपको अच्छा नहीं लगा वो करना, राइट? व्हाट यू डू? फर्स्ट यू गेट एंग्री, व्हाई डिड यू डू दैट सलमान, व्हाई? एंड देन यू रीथिंक अबाउट द सिचुएशन, and when you rethink about the situation, you will feel that the level of anxiety is getting degrading, or you are unable to hide, or you would be able to hide, if you're rethinking of the situation. Same with sadness and fear. एक metaphor सुना होगा आपने, fake it till you make it. I don't know if you guys have heard about it or not. Trust me, it works like charm. ठीक है? As an example, for instance, you have an office and you go to the office and there is one person that's very annoying. Let's say his name is Tom. And then Tom never do his things on time. Okay, that was his first day, he did something wrong, and then you are like, hey Tom, why did you do that? क्यों किया ऐसा ये? तुम ऐसे हो वैसे हो ये वो, कभी कोई काम सही नहीं करते हो, and da da da. And then you get rid of that situation. Okay, you go to your room and then you're fine with your day. And the second day when you come, same thing, Tom ने mistake की, दोबारा आपने उसको डांटा, आपने अपनी feeling express की of you being angry, and on and on. And then third day it happened again. And then fourth day आप कमरे में आए, टॉम ने कुछ बुरा नहीं किया, but just as soon as you saw Tom, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया. This is state programming. Okay, this is state programming. 4 day you just get on that. So emotional regulation techniques are self-awareness, mindfulness for emotions, record your thoughts and emotion, positive self-talk, practice gratitude, self-awareness about ourselves, right? Mindfulness for emotion. What kind of emotion I'm experiencing right now? Is it being sad, or is it am I being angry, or am I being surprised, or I've been caught off the guard because of the confusion or something else? And record your thoughts and emotions. Okay. One small thing. Whenever you are sad, whenever you are angry, whenever you are surprised or cautious or whatever, 6 बेसिक जो हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, आपके पोर्टल पे भी अपलोड की होंगी, आई एम श्योर, वकास आपको बता देंगे. उस 6 इमोशंस को जब भी आप आइडेंटिफाई करें, उसका किस्सा अपने डायरी में जरूर लिखें. लाइक exert it out, express yourself out, right? Just write it down. And in your free time, just look into it again, rethink it again. It will help you a lot. Positive self-talk. Talk to yourself. Hey Salman, it's okay for you to be angry. It's okay for you to be sad for now. But you know what? This is your body. मैं किसी को इस कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस नहीं करने दूंगा that other person would make me cry or laugh or get surprised or whatever. And then practice gratitude. Just again, fake it till you make it. Just do it. Rule of thumb is, कोई भी हैबिट बनानी हो आपने, किसी भी चीज की हैबिट बनानी हो आपने, just do it at the same time, at the same place for 41 days. कोई भी चीज करनी हो एक जगह पे एक ही टाइम पे 41 दिन तक आप करें, 42nd डे आप खुद ही बखुद कर रहे होंगे वो, in like 80-90% of the cases.
Okay. So emotional regulation flows naturally from being the presence of someone we trust. Okay. Now, who do we trust? अच्छा ये आपने एक चीज देखी होगी कि यू आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू योर फैमिली मेंबर देन यू आर टॉकिंग व्हेनेवर यू आर टॉक टू अ स्ट्रेंजर, तो उससे आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज आपकी उसके साथ रैपिटिंग नहीं होती है। रैपिट इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर सब्जेक्ट। वंस यू हैव द रैपिटिंग, यू आर गुड टू गो। आपने एक्सपीरियंस किया होगा किसी लाइफ में एक शख्स के साथ पहली मर्तबा हाथ मिलाया एंड यू फेल्ट दैट एज इफ यू हैव सीन दिस पर्सन बिफोर। ये इससे पहली मर्तबा बात थी, हालांकि पहली मर्तबा हो रही होती बात वो, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे ये शख्स आपको बहुत पहले से जानता है या आप उसको बहुत पहले से जानते हो, और बहुत वार्म फीलिंग होती है। एंड देन ऐसा भी हुआ होगा कि जिसमें आपने हाथ मिलाया होगा एंड यू हैड वेरी नेगेटिव वाइब्स एज इफ यू वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन। उसने कुछ बुरा नहीं किया होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, बिकॉज ये हम सेंस कर सकते हैं कॉन्शियस। दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी सेंस थिंग्स। एंड once we go along, that is rapporting with the stranger, and whenever we say something, it's being taken seriously. Yeah, deja vu is different feeling. Deja vu, yeah, deja vu is a very 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 different feeling. It's like that actually this event has happened before, right? um and maybe tomorrow or day after tomorrow, just remind me, I'll talk about it. I'll try to brief it in simple words. But for now, अभी तक का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। I just hope, because now we're going to go for the assignment and then we're going to close the lecture, because I promised you guys to be, I'll be brief. Okay. So assignment again, I hope that I believe that the assignments are uploaded. So, you have to access the portal again, access assignment section, fill in the assignment form information and submit. And what you need to do, basically list out any situation. Okay. List out any situation, at least two, okay, that gets or got you angry while working in the criminal justice sector, and state which regulation technique may help in the better dealing with it. It could be situation that has happened in the past or something you worried about in the future. यानी कि कोई केस चल रहा हो आपका, उसमें से भी आप ले सकते हैं या पास से भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन बन रहा हो और एक ना बन रहा हो, तो आप एक सिचुएशन हाइपोथेटिकल इमेजिन भी कर सकते हैं, बट जस्ट इमेजिन इट एंड राइट डाउन द फर्स्ट थॉट। ठीक है, ये याद रखें, इसमें कोई सही और गलत जवाब नहीं है, कोई सही और कोई गलत जवाब नहीं है। दिस इज फॉर मी टू अंडरस्टैंड यू so that I can help you to understand yourself and we both help each other. Okay? So if nothing is confusing, then this is it for today's session. And I just hope that I was helpful for you to break some ice on mind-body connection. Inshallah, tomorrow we will be discussing further and going and taking a deeper dive. Inshallah. Okay. Thank you so much. Thank you so much.